बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक नए लेक्चर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के साथ हाजिर है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को स्टडी करने से पहले हम राइट एंगल ट्राइंगल को स्टडी करेंगे। राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का और बाकी दो एंगल्स एक्यूट हैं। कैसे? क्योंकि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो लेट्स से इफ इट इज़ 60 डिग्री then 90 plus 60 150, 150 plus 30 will be equal to 180. So let's say your angle A is theta and it's equal to 60 degree, and your angle B is phi. Let it be phi, and it is equal to 30 degree, because sum of all the angles 60 plus 30 90, 90 plus 90 is equal to 180. सो राइट एंगल ट्राइंगल में वो साइड जो 90 डिग्री के एंगल को कवर करती है उसे परपेंडिकुलर कॉल करते हैं। वहाँ जहाँ प्रोटेक्टर रख के एंगल को मैयर करते हैं, इस एक्यूट एंगल थीटा ए को मैयर करते हैं, वो है जी बेस। और वो लाइन दैट जॉइन बेस टू परपेंडिकुलर इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज, और हमेशा स्लैंट पोजीशन में होती है। इफ़ यू आर मैयरिंग योर एंगल फ्रॉम दिस साइड, फ्रॉम एंगल ए, फ्रॉम थीटा, then your base will be this. You will take base B, perpendicular A, and length of hypotenuse C. Then if you are measuring your angle from this side, angle B, angle phi, then your perpendicular will be converted into base, and base will be converted into perpendicular, but the hypotenuse will remain the same क्योंकि इन दोनों की joining line है. Let us suppose we are taking our trigonometric ratios from this acute angle theta. Now we are going to discuss our trigonometric ratios by angle theta. There are three basic trigonometric ratios: sin theta, cos theta, tan theta. Sin theta formula P by H, perpendicular by hypotenuse; cos theta, base by hypotenuse; tan theta, perpendicular by base. According to this diagram, perpendicular is side A, hypotenuse is side C. So the answer of sin theta is A by C. Cos theta, according to the triangle, base is B and hypotenuse is C. So cos theta will be B by C, and tan theta, as usual, perpendicular by base, perpendicular A, base B. Answer is A by B. All these three trigonometric ratios are used to measure the sides and as angles of any triangle, especially right angle triangles. Sin theta, cos theta, tan theta are used to measure the sides and angles of right angle triangle if there is any missing side or any missing angle. But we usually use some reciprocals of trigonometric ratios. Reciprocal of sin theta is cosecant theta, cos theta secant theta, and reciprocal of tan theta is cot theta. Reciprocal meant for कि अगर sin theta का formula P by H है, cosecant का H by B. Cos theta if B by H, then secant is H by B. Tan theta is P by B, then cot theta is B by B. So there are overall six trigonometric ratios. If you learn any three of them, especially first three of them, sin, cos and tan, perpendicular by hypotenuse, base by hypotenuse, perpendicular by base, then you can learn definitely the reciprocals of them. Hopefully you have got it. Thank you so much. Allah Hafiz.